system, EMG biofeedback unit, and other facilities. Manual therapy lab promotes basic infrastructure for assessment and conduction of manipulation and mobilization techniques for joint and soft tissues. The research lab. It is also designed to facilitate appropriate environment and equipped with latest modalities and tools to carry out research activities with EMG biofeedback and evoke potential unit, electronic pen and maze for sensory integration, dynamometer to measure muscle strength, vestibular rehabilitation aids, and hand re-education tools. The physiology lab is well equipped to conduct practicals on hematology, respiratory system, cardiovascular system, and nervous system. The anatomy lab provides the students with state-of-art models, charts, skeleton, and specimen to practice the minute details of anatomy. This lab has ample number of bones for the students to observe and practice. The lab is also having anatomy museum of human body parts. BCIP has a Wi-Fi enabled campus and a computer lab with dedicated leased line for internet utilization, which facilitates the students for their curriculum and projects. The Physiotherapy Clinic, run by the Institute, has various assessment, diagnostic, and treatment modalities for the patients. The modern equipments for fitness, fat analysis, lung function testing, digital balance assessment, and various others for pain management and rehabilitation makes us one of the best training centers for the physiotherapy students. The primary repository of learning and knowledge at BCIP is the library with over 3,000 books on physiotherapy, medical subjects, and related areas, besides a large collection of newspapers, magazines, national and international periodicals, and journals. BCIP also has a modern auditorium for students' all-round development in different aspects. There is an in-campus canteen, an area for relaxation and rejoicing for the students. The campus also has hospital facility and health services. Hostel facility is also available for both boys and girls separately. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. I welcome you all on this webinar. I would like to request Unnati, student of BPT 4th year, to take over the session. Thank you so much, ma'am. Good afternoon. I, Unnati Agrawal, student of BCIP, welcome all the eminent speakers and guests to today's webinar. As we all know that earlier in the month of January, BCIP organized a 3-day online CME in demystifying pelvic girdle pain, a physiotherapy perspective. The response and feedback of all the participants was overwhelming and encouraged us to hold a webinar series in which we will explore different concepts of physiotherapy case presentations. So, today we are going to shed some light upon one of the most commonly encountered issues in pregnant females, that is postpartum back pain. Postpartum pain, also known as after pains, are significant pains reported by females in many sites of the body after delivery. It may include urogenital, pelvic, back, and breast pains, as well as headaches, persisting for months to years after labor and delivery. To discuss one such interesting case on this topic today, we have with us Dr. Swati Bajaj, who has done her MPT in obstetrics and gynecology and is also a certified Pilates instructor
as well as personal fitness trainer. Ma'am has done her certification in acupuncture and also in neurodevelopmental techniques and reflex stimulation techniques. Ma'am established Mama's Care in Indore and explored its branches in many renowned cities, including Bhopal and Mumbai. Ma'am is also being featured in a yoga series of a TV show, Fitness Guru, at ICC Lifestyle Channel. It's a privilege to have you here with us, ma'am. Now, I would request ma'am to join us and share her views on this topic. Hi, thank you so much, Unnati and the college for having me here, all the organizers. So thank you for the long introduction. Yeah, so my energy levels are a little low. I just had COVID 5 days back. So you have to bear with my bad voice. मानसी आपको आपका ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा. You might not have connected your audio from your side, so you need to connect it. Am I audible and visible to you all? Rest of the people can hear me? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Yeah. So the topic is postpartum pains, and as I conceived it, it was postpartum backache. So let's talk about overall postpartum pain. So many times when we get a client, I usually call them client. I usually don't call them patients because I don't work in a hospital setup. I work as a service provider. So we get people in our prenatal and postnatal classes. So since pregnancy is not a disease, so I don't call them as patients. I usually call them my mothers or clients. So I usually refer them as client rather than the patients. All right. So postpartum, many people, many mothers, they have n numbers of pain, and mostly they come across a situation where they can't even lift their babies up when I talk to them. Or many times, like, I get here from people that after cesarean section, I started having pain, or I have pain at the side of the injection, or I have pain here there's so many different kind of pains what you see, and I would try to incorporate all those things in my today's session. Mostly I would try to keep interactive rather than showing the screen, because I feel the practical things are the most important part, right? So I believe आप में से बहुत सारे लोग actually working हैं, who are working on the real background. If you're seeing patients, postpartum and mothers, or if you yourself are a mother, can anybody tell me what is the main reason of pains after the delivery? Like what all clients or what all patients you get? Mostly आपको सबसे ज़्यादा किस type के cases देखने को आते हैं, तो I'll make sure I'll include all those things. You can unmute yourself and tell, or maybe you can write down on the chat section. So anything. Can anybody tell me why you see all these pain in postpartum mothers? What are the main reasons? What all pain के साथ patient आपके पास आते हैं? यहाँ पे सारे practicing physio, मतलब are they practicing or physios as well, or just the students? And there are practicing physios also. Practicing physios also. All right. So ठीक है, by the time we'll get to know about आप लोग के पास किस type के patients आते हैं, I'll talk about my personal experience, and trust me, whole day and night, from morning to night, I deal with mothers. Whole day. It could be preconception, prenatal, postpartum, latent period of postpartum, or overall later. Okay. So सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जो बैकएक के लिए, रेगुलरली भी जो बैकएक होता है लोगों में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है the core strength. This is what I realize, because most important thing postpartum is their muscle strength is severely hampered, and because the core strength is hampered, it cannot provide a sufficient amount of strength to the spine.
And because of that, all those bad ergonomics, bad postures, bad feeding postures, the standing or the laying down in bad position, they're constantly feeding their babies all the time. They sit and lay down in incorrect posture. खड़े होते हैं, खुद का बच्चा उठाते हैं, their back hurts because उनके spine को support नहीं है. Okay, so the most important part is their core strength when we talk about their backache, or in fact आप backache भी रहने दीजिए. Even if you talk about the trapezitis, even if you talk about the upper backache, or if you talk about any other, many people have rib cage pain. I had a lot of rib cage pain postpartum because what happens, your rib cage expands in pregnancy. So later on when the baby is out, the whole structure has to come down to its own earlier space. So it really is very painful. So ये सारी जो problems होती है, सबसे बड़ा issue होता है core strength. Okay, I want to share a picture with you all. All right. I would like to share one picture. Give me a moment. Yes. So I had to share the case study. So this is my client or patient, whatever you call it. Her name was Yamini Makde. I've also posted her story on my Instagram and Facebook because I keep on sharing so many mother story. So, but this was one case which was revolutionary for myself. I have been, sorry. So can you all see the picture now? Yes, ma'am. Okay. Yeah. So this was Yamini Makde. I knew her since her pregnancy time. When she was 5 months pregnant, she came to me for the pregnancy classes. And looking at her at 5 month pregnant state, I told her you're gonna have bad diastasis recti. In fact, unke 8th month mein I could tell कि you have bad hernia. If you see right here, बीच में आपको उनके बच्चे का जहाँ knee है, just वहाँ पे आप बीचों बीच देखोगे, तो you can see a small pop-up kind of thing in her belly, which is basically the hernia. So in her pregnancy itself, I told her you're gonna get bad hernia along with bad diastasis recti, the full length. And trust me, she used to tell me in her pregnancy that I feel like sleeping standing position because whenever I lay down, I just cannot bear the pain. And after her delivery, when her baby was around 2 months old, one fine day, she called me from her native place where she delivered her baby. And she told me, Swati, I can't even lift my baby up. I can't even turn in the bed. I'm so much in the pain, or I can't even stand on myself. I feel like falling off. I feel like falling. And there's one small ball type thing coming from my belly. क्योंकि आप pregnant होते हो तो pregnancy में आपको नहीं दिखाई देता hernia. But then later on, after the delivery, you can definitely see that bad hernia ka pop up. So it took me a second. I told you, you're going to have bad diastasis, you're going to have hernia, and this is why you're having pain everywhere. All right. So now I'll tell you, क्यों आपको diastasis या back muscles weakness या abdominal muscles weakness की वजह से backache होता है. So what happens is, हम सबको पता है, अभी आप सब प्रोफेशनल हैं, even if you're students, I believe आप लोग सेकेंड ईयर के बाद के स्टूडेंट्स होंगे, so you know the biomechanics, right? So हमारे यहाँ की जो transversus abdominis muscles होती है और उसके ऊपर rectus abdominis muscles होती है, so यहाँ से जब rectus abdominis muscles फैलती है, जब आपका belly फैलता है प्रेगनेंसी में, तो धीरे 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 आपकी muscles separate होती है अगर आपका belly जरूरत से ज्यादा फैलता है तो, और यहाँ से मिड लाइन में उनको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डायस्टेसिस था. नाउ व्हाट इज हर्निया? अपनी जगह से कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन आपका बाहर आता है. मोस्टली पोस्टपार्टम इट इज ओमेंटम का हिस्सा या कोई इंटेस्टाइन का हिस्सा. सो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता, द शीथ इज ओपन, यहाँ से उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट अंदर का pop up hota hai. So she had omentum in her hernia. All right.
सो व्हाट हैपेंस जब भी खड़े होते हैं, है ना, अभी जब हम खड़े होते हैं और जब हम सामने झुकने की कोशिश करते हैं, लेट्स से इफ आई एम बेंडिंग ओवर, ओके, सो अभी मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स अंदर है, ये बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मेरी मसल्स ने उनको अंदर रोक करके रखा है, राइट? ऐसे ही नीचे से हमारी बॉडी ऑर्गन्स नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स का सपोर्ट है, पीछे से बैक मसल्स का सपोर्ट है, तो वी हैव मस्कुलर सपोर्ट, जिसकी वजह से अंदर की चीजें बाहर नहीं आती. But when this muscle support is gone, when the muscles are separated, and when you try to lift your own baby, so what happens? Everything just tries to come out. You can't actually just keep everything in its place, and uske liye aapka pura spine disturb hota hai. Mostly जब आप देखेंगे pregnancy में किसी भी lady को, आपने movies में देखा होगा, रेगुलर लाइफ में तो आजकल विमेन एक्टिव होती है तो इतना बैड पोस्चर नहीं होता, बट आपने मूवीज में देखा होगा कि लेडीज को पहले ऐसे चलता हुआ बताते थे जब भी प्रेग्नेंट होते थे. आप बच्चों के साथ किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे बच्चों को देखेंगे लेडीज को, सो दे आर कैरिंग देयर बेबीज दिस वे, देयर बेलीज आर यूजुअली पॉप्ड अप, इस तरह से बाहर से ऐसे जाती है. क्यों? क्योंकि जो मसल्स है जो पेट को अंदर रोक के रख सकती है, वो मसल्स वीक हो गई है. क्योंकि ये मसल सपोर्ट नहीं है तो मोस्टली उनका जो पॉस्चर होता है इट इज दिस. अब ये जो पॉस्चर है उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपकी लोअर बैक पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है. आपका बेली जब कॉन्स्टेंटली आउट है, सो चांसेस ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस पेन भी उतने ही ज्यादा होते हैं. दिस गर्ल शी ऑल्सो हैड अ वेरी बैड प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन, बहुत ज्यादा. प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन जब भी होता है तो वो पोस्टपार्टम भी आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, कभी कभी 1 साल तक भी होता है. सो जब भी बैठ करके खड़े होते हैं, चलना चालू करते हैं, करवट लेते हैं, रात में सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, कार से बाहर आते हैं, बाइक से बाहर आते हैं, सो यू हैव अ शार्प पेन हियर. मोस्टली क्योंकि आपका पूरा बायोमैकेनिक्स बिगड़ा हुआ है तो एसआई जॉइंट की चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं. अगेन इन टर्निंग, शिफ्टिंग, lifting your baby up, lifting yourself up, moving around, you have mostly ये पूरे एरिया में आपका पेन कहीं ना कहीं जॉइंट्स बायोमैकेनिक्स की गड़बड़ की वजह से बना रहता है, राइट? सो अब अगर मेरी जो मदर थी उसको बैकएक का प्रॉब्लम था तो मैं क्या कर सकती थी? क्या मैंने उनको अल्ट्रासाउंड दिया? नहीं दिया. क्या मैंने उनको एसडब्ल्यूडी दिया? नहीं दिया. क्या मैंने उनको टेंस थेरेपी दिया? नहीं दिया. आई डिड नॉट गिव अ सिंगल मोडालिटी टू हर. I did not give any kind of pain relieving thing to her. Rather, I started working on her core. Kyunki this is the thing which is going to affect her lifestyle in a long run. Okay? More than that, she was also carrying that extra amount of weight. Usually postpartum mothers के साथ अपनी उस नई बॉडी को एक्सेप्ट करके उसके साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. सो व्हेन यू रिड्यूस मे बी 20 kgs, 25 kgs, whatever based on your ideal BMI is, that girl, she reduced around 24 kgs. And imagine when you reduce 24 kgs, that means you are putting off that extra 20 kgs, 24 kgs off your spine. So that is also going to help you in the backache. It is going to help you in achieving your overall biomechanics. And when we talk about diastasis recti, backache and all that stuff, that doesn't mean कि हम केवल और केवल backache की exercises देते हैं. ऐसा नहीं होता. We do whole body workouts, full body workout, right from the head to the toe. Full body workout is important for the correct biomechanics. All right. So now I'll share the other picture. All right, give me a minute. All right. So ये आप लोग जो मैं देख सकती हूँ, आप में से कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं. So you might have seen this picture because I've shared this case study. So you can see the very same person after 6 months was like this. You can't see any hernia. You can't see any diastasis recti in the second picture. So this is what I believe in doing for a backache person or normally a person who has multiple pains postpartum. Rather than giving
pain modalities rather than giving like, any pain के लिए दवाइयाँ या ये belt, वो belt, nothing is needed. Okay, because many time people say आपने बेल्ट नहीं बांधा डिलीवरी के बाद में, इस वजह से आपको बैक एक होता है, you should be wearing the abdominal corset, but we should be using the nature gifted belt, our own muscles. So this is how, like, if I talk about the case, so this is how we dealt with that particular case, right? And इस तरह से हम काम करते हैं. अगर हमारे पास कोई बैकएक का पर्सन होता है तो you need to basically see the main reason why the person is having that particular pain, why the person is having that particular issues, right? Now many people tell कि उनको, आप लोग ने भी सुना होगा I think कि epidural लेते टाइम मल्टीपल टाइम जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पंक्चर करते हैं नर्व को, उसके वजह से उनको बाद में बहुत बार 1 साल बाद तक 2 साल बाद तक भी पेन बना रहता है. या बहुत बार आपके पास ओपीडी में पेशेंट्स आते होंगे और बोलते होंगे कि हमने सिजेरियन हुआ था, तो जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहां पे जब भी ठंड के दिन आते हैं, बादल होते हैं, तो हमको पेन होता है. Now if you go in the literature you won't find any such things happening. आप अगर किसी गायनेक से बात करेंगे they would deny clearly that ऐसा कुछ भी नहीं होता. But the literature speaks about the ideal thing and the ideal scenario. I have come across many people because that they had that episiotomy stitches, they had that epidural catheter का multiple puncture उनको उनके anesthesiologist ने किया. They had to puncture once, twice, thrice just to get the ideal site of the injection, and उसके वजह से बाद में कभी-कभी उनको problem हुआ, pain हुआ. Now, speaking of the literature, ऐसा कुछ नहीं होता. एपिड्यूरल की वजह से या LSCS के इंजेक्शन साइट के जगह पेन होने का कोई प्रूफ नहीं है. प्रूफ एज इफ कोई उसका रेशनल नहीं है. बट आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो मदर्स हैव पेन. Okay, so you have to deal with whatever kind of patients you get, whatever kind of problems you face. Okay. So I believe आजकल तो बड़ा popular हो चुका है diastasis recti या hernia. I have been trying my level best to provide all these informations on the social media because I am not a clinical practitioner. I would call myself more of a business person rather than a clinical person because हमारा काम यही है to deal with mothers in their pregnancy, postpartum, preconception journey. All right. So I realized, and why I started working in pregnancy and postpartum and all that stuff. So way back when I was in college, I just got to know that the richest physiotherapist is gynec physiotherapist. So that gave me an inclination towards the field, and I thought of coming in this field. And I thought that this field is comparatively untouched. Not many people are working, and I always wanted to do unique things, right? And I realized कि pregnancy को लेके इतना awareness नहीं है, and I started spreading awareness and taking classes and all that stuff. Then later I realized कि no, pregnancy को लेकर तो अभी भी बहुत awareness है. Your family support is so much in pregnancy, but the most important part is postpartum phase. Later on, I realized कि pregnancy से कहीं ज़्यादा. Now, if you call in a scientific way, you call कि हाँ आपको major जो आपको problems होते हैं वो postpartum में होता है. Now, if I see as a person who is running a business, I see a bigger market in the postpartum industry because I realized पहले के जमाने में बोलते थे mothers को pain होना is normal, mothers का पेट बाहर रहना is normal, mothers के साथ hernia, diastasis तो ठीक है, लोगों को पता ही नहीं था. They were just like कि पेट रह जाता है, cesarean का पेट. This is what you usually hear, right? So mostly people used to tell कि delivery के बाद ये सारी चीजें normal है. But no, it is all normal. It has to be taken care. It has to be taken care by the proper professional, all right? And still I feel so bad that it should make a mandatory thing that at the time of discharge, the doctor should check a mother for the diastasis recti, for all the incontinence problem, for the herniation. अगर शुरुआती time से ही doctors
पहले से ही अगर चेक करके उनको तभी डील कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मेनी पीपल सफर विद अ लॉट ऑफ बैकएक एंड ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज दे कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबीज ऑल द टाइम. So I see a person not just the backache perspective but the lifestyle perspective कि उनकी life आगे क्या होने वाली है. Because many mothers I know they suffer through baby blues and postpartum depression. अभी आपने पढ़ा होगा ये येदियुरप्पा की जो daughter in law है, she committed suicide because of the postpartum depression and she herself was a doctor. So you can imagine the issues, how deep it is. And a person goes into deep mental distress when the person is also having a lot of physical distress. When a person wants to do so many things, but the person is not able to do because of so many other factors postpartum. All right. So then I realized कि अच्छा pregnancy तो फिर भी ठीक है. People are still taking care in their pregnancies. It is very important to take care of a mother in the postpartum phase, right? Now, पहले postpartum phase कब start होता था? Normally, I'm talking about the general criteria. Normally, जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता था, तब mother सोचते थे कि now I need to take care of myself. अभी breastfeeding wean हो गया, अभी मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है. I need to get back into my normal life. But the era we are living in, people need to start their offices by 6 months, 5 months. They need to wear their office attires. They need to look good. They need to feel good. They need to be active and fit and healthy, because most of the time they are living on their own. They are not having family support. They are not having their in-laws around or the mother around. Mostly women like me live alone. We don't have any help. So that's why the postpartum care should start from the hospital. Yes. The postpartum care should start from the hospital. Hospital में हम सभी को ये चीज का बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है कि जो बेसिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है वो पोस्टपार्टम सिखाई जाए, जो कि मैक्सिमम हॉस्पिटल में सिखाई जाती है. Then you need to tell them the next set of exercises which has to be taken care, like that 15 days बाद आपको ये start करना है, 1 month बाद आपको ये start करना है, 3 months बाद then a person starts with proper postpartum exercises like 1-hour classes. This is what we do. We start post normal delivery 1.5 months postpartum, we start with exercises. Post cesarean section we start 3-month postpartum exercises. So when a person starts 3-month postpartum with anything, and when the person take care of themselves such early phase, तो जब तक उनका बच्चा 6-7 महीने का होता है तब तक they are almost into their normal life. They are almost recovered and rehabilitated to the normal lifestyle. Okay. Now I'll also teach you some techniques about how to deal with all these backache, posture, maybe some techniques for the diastasis recti and all. If you want to ask any question, we still have half an hour remaining. I would ask you guys what you want to know so that I'll make sure कि मैं वो सारी चीजें बचे हुए आधे घंटे में cover कर पाऊँ. So anybody wants to ask any questions? I would really appreciate अगर आप लोग के कोई doubts है, कुछ questions है तो आप मुझसे पूछें. आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं. हम SI joint pain one post. One by one. Yeah, please. Yes, बोलिए. SI joint pain in postpartum. SI joint pain postpartum. Yes, वो भी एक बड़ा इशू रहता है, but SI joint pain बहुत ज्यादा postpartum नहीं देखा जाता. होता है definitely, and SI joint pain के साथ भी आपको majorly I'll tell you a few techniques how to deal with that, what all instructions you can give to your mothers कि वो क्या क्या कर सकते हैं. But majorly it's all complete biomechanics. As I told you, we take care of a person as a whole, right from head to toe. We give all exercises like full workouts we teach them. So ऐसा नहीं देखते कि SI joint है तो जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में होता है कि अच्छा एल्बो का पेन है तो हम एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे, या SI joint का पेन है तो SI joint की एक्सरसाइज करेंगे. No, we give full body workouts. I'll also teach you the techniques, few techniques कि आप उनको क्या बोल सकते हैं ध्यान रखने का, जिससे 80% तक SI joint पेन काफी हद तक बेटर हो सकता है. What else?
Ma'am, how does breastfeeding posture have a role in low back pain? A Like when the very big breastfeeding is there. Yeah. a very big Yeah. role it has, of course. That is one complete story, I would say. So अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊं तो जो देखिए हम तो प्रेगनेंसी में ही हमारी मदर्स को बता देते हैं. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट वी डू, राइट, बिकॉज वी टीच ऑल द फीडिंग postures एंड एवरीथिंग इन प्रेगनेंसी इटसेल्फ कि ऐसे करना है, बट स्टिल आपके पास बाद में भी है. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हाट वन नीड्स टू टेक केयर इज योर बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, राइट. नॉर्मली क्या होता है, आपके बच्चे को आप इस तरह से लेके अगर आप ऐसे फीड कराते हो तो आपको सामने झुकना पड़ता है, या उससे भी बुरा ये होता है कि पीपल गो इन स्लाउट सिटिंग, ऐसा बैक रेस्ट होता है बेड का. व्हाट पीपल डू, वो इस तरह से लेके ऐसे फीड कराते हैं. यू कैन सी अधिकतर लोग का बैक रेस्ट होता है बिकॉज मोस्टली 90% टाइम तो आप बेड पे ही लेट करके या बैठ करके आप फीडिंग करने वाले हैं. सो मैक्सिमम पीपल व्हाट दे डू इज, ये उनका बैक रेस्ट है, ऐसे आगे होंगे और ऐसे होके. तो यू कैन इमेजिन द बैक का posture which is very 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 bad. तो अगर ऐसा होना भी है तो you need to tell them to put pillows here. You need to tell them प्रेगनेंसी पिलो यूज करें, नॉर्मल पिलो यूज करें, जो भी पिलो यूज करें. सो आस्क देम टू पुट पिलोज इन योर लैप एंड देन कीप योर बेबी इन द लैप, इस तरह से. तो नाउ व्हेन द बेबी विल बी हियर, so I don't have to bend over, I will be straight, the baby will be near me. या अगर पालथी लगा के भी बैठना है तो नी के नीचे पिलो रख के, आपकी लैप में पिलो रख के, then they can feed. What happens many time we teach but then they don't follow. But आप अगर पहले से ही उनको अवेयर करते रहेंगे कि नहीं ये करना है वरना बाद में तकलीफ होगा, so बहुत हद तक they can take care, and if they take care of their postures, most of the pains can be cured. काफी हद तक, एटलीस्ट अपर बैक यहाँ पे बहुत एसिडिटी की वजह से बहुत अपर बैक एक होता है. वी डोंट रियलाइज मेनी टाइम्स. बहुत गरम गरम खाना देते हैं डिलीवरी के बाद में, और कभी कभी रात के टाइम पे पानी नहीं देते मदर्स को कि पेट फूल जाएगा. व्हेन यू वर्क प्रैक्टिकली यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि रात भर पानी नहीं देते तो उसकी वजह से सुबह बहुत एसिडिटी प्रेसिपिटेट होता है. और ऐसे तो हम तो ऐसा करने ही नहीं देते, we teach them. But when a person comes to you and when you start asking them about questions, so you realize about so many different things. So रात भर पानी नहीं पीते, सुबह एसिडिटी होता है, एसिडिटी की वजह से यहाँ पे trapezius pain, और normally you feel a lot of stiffness in your muscles because of the acidity, and उसकी वजह से भी pain होता है. Coccydynia related to pregnancy, see there is not much what we can do in coccydynia apart from the postural techniques. All right, क्योंकि अभी तो इंटरनल चेकअप प्रेगनेंसी में ही बंद हो गया है, डॉक्टर्स ही नहीं करते इंटरनल चेकअप. सो forget about putting your hands in their anal area and in their perineum and then उनको coccyx को modify करना. Somebody has asked question about coccydynia. So देखिए कॉक्सीडाइनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है बैक पोस्चर. बिकॉज आप जब भी उनसे पूछेंगे तो मैक्सिमम लोग वर्किंग रहेंगे या वर्किंग भी होता है, तो आजकल सब घर से काम कर रहे हैं, तो मोस्टली पीपल डू दिस वे, इस तरह से. लाइक नॉर्मली वो आगे होके बैठते हैं. अगर ऑफिस का काम भी करना है तो ऐसे आगे होके अपने चेयर पे या बेड पे they sit, they keep their computers here and then they work. Or even if they are watching movies, they usually sit in this position. Like this is hollow. They are sitting this way, the slouch sitting position. So सबसे बड़ी चीज कॉक्सीडाइनिया में, अगर स्लाउट सिटिंग, ये सिटिंग बंद कर दिया तो 90% पेन वही बंद हो जाएगा. कॉक्सीडाइनिया के लिए वेजेस आते हैं, पिलोज वेजेस. सो वी आस्क देम टू सिट ऑन दोस पिलोज वेजेस. ये आप सबको पता है कि जो बच्चों का जो स्विमिंग वाला ट्यूब आता है, आई हैव हैड क्लाइंट्स जो कि मेरी क्लास में भी अपना वो स्विमिंग ट्यूब लेके आते थे बैठने के लिए. सो दैट इज अ गुड थिंग कि वो जो स्विमिंग ट्यूब आता है उसके ऊपर वो बैठ सकते हैं, या स्मॉल इस तरह के कुशन्स जो होते हैं तो वो दोनों हिप के नीचे, एक इधर और एक इधर. तो जब इस तरह से लगा के बैठते तो कॉक्सिक्स के ऊपर directly pressure nahi aati, you're sitting up. Or even many of my clients usually jab unko office ke liye kaam karna hota hai to they either do the standing workstation, standing mein unka kaam karte hain, ya
स्विस बॉल के ऊपर बैठ करके, क्योंकि स्विस बॉल पे यू कैन स्लाउच, यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड देन दूसरा नीचे की साइड ज्यादा प्रेशर नहीं बनता. सो वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ रादर देन गिविंग सम टेंस वहां पे जाके, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होना है तो आपके ऊपर आएगा. So I try to avoid any application of any electrical stimulation or any manipulation in pregnancy, just to play safe this thing. Because when you work in the actual background, the scenario is way different. कभी गलती से कुछ होने वाला है patient को तो doctor will ask क्या किया था, दिल से I went to my physio, she gave me some machine उन्होंने लगाया, फिर ऐसा हो गया. Better you stay away from all these things. Try to work through the techniques and exercises and everything. Let me check some more question. I'm sorry, I'm panting. Some researchers have shown that rib cage diameter doesn't go back to normal. Then what to do? Coccydynia. All right. अच्छा, आपने बोला है कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी. देखो, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर टॉपिक. हमारा टॉपिक आज का पोस्टपार्टम है. ओके, सो बट स्टिल आप जो हमारा एक नॉर्मल टेक्निक होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोनिंग में पेशेंट को लेना है और टू इम्प्रूव लाइक उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो पहली बात तो थोड़ा सा इंक्लाइन में, उनको रात में सोने के लिए भी इंक्लाइन में बोलते हैं. फिर भी अगर आपको प्रोनिंग पे लेना है, अगर आपको लाइक यू नो, सो दिस इज द पोजीशन. इस तरह से अगर किसी को आपको इस तरह से आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द बेली यू कांट टेक पर्सन इनटू प्रोन लाइंग एंड देन उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, सो हम इस तरह से उनको बोल सकते हैं, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख के, वॉल के सपोर्ट से या चेयर के सपोर्ट से या किसी भी सपोर्ट से. इनफैक्ट हमको कभी मसाज भी when we teach their patients about their back cave massage and all that stuff, so we do it in this position. The object should be stable, या हम चेयर पे उल्टा बैठ करके and then the person feels better इस तरह से. So ये भी आपको एक तरह से प्रोनिंग का फील देता है. Somebody has asked me the question, so yeah, this could be the position rather than actually coming into position. Yeah, it is very common. Pubic symphysis dysfunction is very, very, very common. There is variation in course and duration of the pain persisting between C-section and vaginal birth. I did not understand your question. There is variation in the course and duration of the pain persisting between C-section and vaginal birth. ऐसा कुछ नहीं है. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिजेरियन वाले का पेन का कोर्स अलग होता है, नॉर्मल डिलीवरी वाले का पेन का कोर्स अलग होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉर्मल वाले को भी पेन हो सकता है, सिजेरियन वाला भी एब्सोल्युटली पेन फ्री रह सकता है. लेट्स नॉट एक्चुअली, हाँ, अभी कब एक्सरसाइज स्टार्ट करना, दैट डेफिनेटली मैटर्स. लाइक सिजेरियन के बाद 3 months का टाइम लगता है एक बार पूरी तरह से. गिव मी अ मिनट. Which kind of dysfunction, superior, inferior, etc. आप किस चीज में बोल रहे हैं dysfunction, superior, inferior? Pubic symphysis में आप बोल रहे हैं? Okay, देखिए, अभी आपका pubic symphysis कितना बड़ा है? Pubic symphysis is like this much. Okay, अभी उसमें क्या, उसमें when, as I told you again, we don't deal a person like, you know, कि we don't deal with a particular joint. ठीक है, हम कभी भी प्यूबिक सिम्फाइसिस या कोई भी अगर पेन होता है तो केवल उसमें नहीं जाते कि उसमें भी सुपीरियर, ये सारी चीजें एग्जाम में लिखने के लिए अच्छी होती है कि सुपीरियर डिस्फंक्शन है, इंफीरियर एरिया में डिस्फंक्शन है. जनरली प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन क्यों होता है? व्हाट आई टीच टू माय क्लाइंट्स बेसिकली इज, जनरली ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है व्हिच इज फिक्स्ड. इसके अंदर कोई मोशन नहीं होता, ना एसआई जॉइंट में ना प्यूबिक सिम्फाइसिस में. अभी नेचर को नहीं पता कि नीचे जाके सिजेरियन सेक्शन आजकल होने लगा है लोगों का, but the nature has given us the beautiful quality to our joints to expand in order to bring the babies down, right? So, and how our joints expand, हमारी
जो ये पेल्विस है इसके पास दो ही रास्ते हैं, ओके, या तो सामने प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्रॉड करके अपने आप को ब्रॉड करे, और या तो पीछे एसआई जॉइंट। एसआई जॉइंट में भी दोनों जॉइंट्स में कभी पेन नहीं होता, वन इज मोर वल्नरेबल, ओके। सो यहाँ ये जो जॉइंट हुआ करता था जो कि बिल्कुल फिक्स था, वहां के लिगामेंट्स अब थोड़ा थोड़ा मूव होके एक एक्सकर्शन देने लगे हैं जॉइंट को, जिससे थोड़े हद तक आपकी पेल्विस ब्रॉड हो पाए एट द टाइम ऑफ बर्थिंग, बच्चे के हेड को अकोमोडेट करने के लिए मूव करते जाए। तो नाउ व्हाट हैपेंस, अ पर्सन इज सिटिंग एंड द पर्सन गेट्स अप फ्रॉम द प्लेस, अचानक से यहाँ पे पेन होने लगा, या टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, अचानक से पेन होने लग जाता है, या कार से उन्होंने पैर निकाला, अचानक से पेन होने लग जाता है, रात में सोते टाइम करवट लेते हैं, अचानक से पेन होने लग जाता है, बेड से करवट लेते टाइम जब बाहर निकलते हैं तो उनको पेन होने लग जाता है। तो वी टीच देम अबाउट द टर्निंग पोजीशन, वी टीच देम, तो जब भी टर्निंग लेना है तो नॉर्मली कैसा होता है, एक बार एक पैर आप बाहर निकालते हो, फिर दूसरा पैर निकालते हो, तो वी आस्क देम टू जस्ट बेंड देयर लेग्स फर्स्ट, देन डू द ब्रिजिंग, एंड ब्रिजिंग पोजीशन में जहां दोनों पैर मुड़े हुए रहते हैं उस पोजीशन में यू टेक अ टर्न। So first take your legs in, then take your hips up, and then take a turn with both the legs together. जब भी करवट लेते टाइम एक पैर बाहर निकाल के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, they will have pain, right? Then we ask them to do stretches, या चेयर के साथ stretches कर सकते हैं इस तरह से, simple. This side lunge is pretty good. और इस तरह से we ask them to stretch. So even this really helps. Alright, so ये काफी हद तक उनको help करता है, ठीक है। या जब भी उनको लेट करके बैठ करके खड़े होना है तो आई आस्क देम टू जस्ट वॉक फर्स्ट एट वन प्लेस। सॉरी, मेरे को अभी ब्रीदिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। तो या खड़े खड़े इस तरह से जब भी वो बैठ करके खड़े होते हैं, या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होता है जब वो बैठ के चलना चालू करते हैं या लेट के चलना चालू करते हैं, तो आप उनको बोलिए कि इस तरह से बैठ के खड़े होते टाइम पहले थोड़ा सा एक ही जगह पे वार्म अप करो एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग। तो उससे क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स फ्रीज हो जाते हैं। नाउ दिस इज जस्ट अ स्मॉल टेक्निक, राइट, कुछ नहीं, केवल खड़े होके पहले वार्म अप करना है 10 seconds and then you start walking. So when they do this particular thing, 90% पेन उनके खत्म हो जाते हैं। और we ask them their husbands कि वो थोड़ा थोड़ा उनके लेग को थोड़ा थोड़ा मूव करे, तो उससे काफी हद तक they feel better. Why abduction and external rotation is avoided? बहुत सीधी सी बात है ना, and if painful, I will train the muscles. What are the precautions? यही मैंने आपको बोला कि कभी भी एकदम से पैर बाहर मत निकालो. This is the joint which was supposed to be fused. There should be no movement in this position, right? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल उनको मना कर दे कि external rotation और abduction मत करो. But we ask them to avoid any haphazard abduction and external rotation. एक्सरसाइज के फॉर्म में तो हम करवाते हैं, उसी से ठीक होता है, बट एकदम से जब लेटे लेटे बाहर पैर निकालते हैं या खड़े होके पैर निकालते हैं तो दिक्कत होता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉडी जब बाहर ली उन्होंने, आपके दोनों जॉइंट्स जब आप एकदम से एक पैर बाहर निकालोगे तो ये लिगामेंट उनका स्ट्रेच होगा और उसकी वजह से उनको पेन होगा, अटक जाते हैं। बहुत बार बाथरूम में बैठे बैठे खड़े ही नहीं होते बनता। सो दिस इज व्हाई वी आस्क देम. Low back pain can be pelvis girdle pain, lumbar region. So how can we differentiate? Why the hell you want to differentiate between the, like, you know, आप जब काम करोगे ना, how can we differentiate between these two? Okay. देखिए, आपने बोला lower pain can be from pelvic girdle और lumbar region. तो आप उनसे पूछोगे ना कि आपको कहाँ पेन है, they'll tell you the exact site कहाँ पेन है. अभी अगर मिड लाइन में पेन है तो मोस्टली इट इज लंबर रीजन का पेन. अगर पेल्विक गर्डल का है तो दे टेल यू डिफरेंटली कि ये एसआई जॉइंट की जगह पे पेन होता है या उनको सामने नीचे पेन होता है. एंड देन दे डोंट कम अप विद द टेक्निक की, दे डोंट कम अप विद द वर्ड की इनको प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन है. 90% टाइम द पर्सन वुड टेल यू मुझे वजाइना में पेन होता है, कैन आई डू एक्सरसाइजेस, मुझे वजाइना में पेन होता है. Mostly the person comes with this complaint, right? So agar they are coming up with this word vagina mein pain hota hai, तो I need to tell them that vagina is not something which can pain. Then I
टेल देम कि देखो यहाँ पे ऐसा प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है जो यूजुअली फ्यूज होता है, अभी आप एकदम से मूवमेंट करते हो तो प्रेगनेंसी में ये एक दूसरे से दूर जाता है, तो यहाँ पे आपको पेन होता है, सो यू नीड टू डू दिस दैट एंड व्हाटएवर। आप जब अच्छे से पेशेंट को सुनेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ से पेन है, बट अल्टीमेटली हमारा काम यही है कि हमको उनके मसल्स को जो टाइट है उनको रिलीज करना है, जो वीक है उनको स्ट्रेंथन अप करना है, राइट? अल्टीमेटली हमारा मेन एम यही होता है। आई स्टिल डोंट गो एज पर लाइक यू नो ओनली कि अच्छा ये पेन है तो ये करेंगे, ये पेन है तो नहीं। स्टिल अगर किसी को एक पेन भी है तो भी the person has to do full body workouts right from the head to toe, and if the person is pregnant they ask me मैम 5 एक्सरसाइज बता दो जिससे मुझे पेन नहीं हुआ है, say there is nothing like 5 exercise. When you do regular exercises with me you will be pain free, so you need to work in that perspective. अगर आपको चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में फिजियो का इम्पोर्टेंस बढ़े, विजाइनल पेन नहीं होता, विजाइनल पेन हम लोग ठीक नहीं कर सकते, इट इज नॉट विजाइनल पेन, इट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड टू आस्क देम टू अवॉइड अब्रप्ट मूवमेंट। जब भी वो बैठ करके या खड़े होके चल रहे हैं तो एकदम से मूवमेंट अवॉइड करना है, उनको थोड़ा सा पहले वार्म अप करना चाहिए एंड देन दे शुड स्टार्ट वॉकिंग। या करवट ले रहे हैं तो ऐसे एक पैर बाहर निकाल के नहीं, दोनों पैर एक साथ मोड़ करके करवट लो, ब्रिजिंग करके। मैंने एक दो वीडियोस भी डाले हैं यूट्यूब पे। मेरी लास्ट टाइम जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप हुआ था, लास्ट टाइम नहीं, मेरे अहमदाबाद वर्कशॉप के, सो यू कैन रेफर। मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन और एसआई जॉइंट पेन के लिए आई हैव शोन सम मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अभी मेरे पास यहाँ पे पेशेंट नहीं है तो आई कांट शो द टेक्निक्स, but I have put a video on my YouTube channel, so you can check that out. मैंने खड़े खड़े भी pregnancy वाले भी कुछ डाले हुए हैं, what a person can self stretch, how the person can self stretch in pubic symphysis and SI joint pain, so you can find out there. So yeah, let me check few more questions, then I'll come back to finally core strength कैसे आप achieve कर सकते हो। Obese individual, postpartum backache, dyspnea during exercises. All right, देखिए जौहर, ओबीज अगर कोई है तो ओबीज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, सो अगेन अगर मेरे पास कोई बैकेक के साथ आता है पोस्टपार्टम, जिनका वेट ज्यादा है, जैसे मैंने आज आपको जो केस स्टडी बताई, so we reduced her almost 24 kgs, okay? So ये जो weight loss है, this we achieve through diet plus exercise. केवल exercise के through weight loss करना बहुत मुश्किल है, I'm not saying impossible, but dietary modifications are important and it is a complete big topic. कैसे diet plan बनाना, कैसे कैलोरीज लैक्टेशन को ध्यान में रखते हुए सेट करना, व्हेन अ मदर इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो कैसे, सो डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। आई वुड से मैक्सिमम वेट लॉस वी अचीव विद द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइजेस के थ्रू वी अचीव द फिटनेस, राइट? सो एक मुझे बहुत बड़ा कंप्लेन हमारे फिजियोथेरेपी की बुक से है, मेरे पास ना टाइम है, ना एनर्जी, ना इंटरेस्ट है लिखने में, बट आई वुड रियली वांट सम डे दैट आई शुड राइट डाउन टेक्निक्स फॉर द डायस्टेसिस रेक्टाई, ओके? अच्छा, आप लोग में से अगर कोई थर्ड या फाइनल ईयर के हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है किशनर में क्या टेक्निक दी हुई है डायस्टेसिस रेक्टाई ठीक करने के लिए? What particular exercise or what particular maneuver they have told us to correct diastasis recti? Can anybody tell me कैसे ठीक करते हैं हम लोग? डोंट डू क्रंच, बट आप फोटो याद करो, अगर आपने किस्नर पढ़ा हुआ है तो आप फोटो याद करो उन्होंने कैसे बोला हुआ है, टेक्निक उसका क्या बताया हुआ है। आई स्टिल रिमेम्बर एक बेड पे लेडी लेटी होती है, कैन एनीबडी टेल मी? और क्या क्या इस तरह से वो बोलते हैं कि ब्रेसिंग करके ऊपर की साइड क्रंच करो, डू एनीबडी रिमेम्बर दैट? देयर इज a lot of misconception regarding diastasis recti. Let me tell you, seriously, like when the person joins, they tell me, मैम हमने तो नेट पे पढ़ा था क्रंच नहीं करते, मैम हमने तो पढ़ा था कि प्लैंक करना चाहिए, मैम हमने तो पढ़ा था कि प्लैंक नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है
अरे क्रंच करोगे तो डायस्टेसिस और खराब हो जाएगा, कोई बोलता है क्रंचेस करने से ही तो पेट कम होगा, जब तक पेट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पेट कैसे कम होगा, फिर क्रंच करने जाते हैं तो बैक एक लेके आ जाते हैं. सो देयर इज नथिंग व्हाट वी कैन नॉट डू इन डायस्टेसिस. There is something called how to do any exercise when you have diastasis recti. The most important part is your core engagement technique, right? So even if you're doing even if you're doing crunches, we start with standing crunches, then we start with sitting, we do laying down at the end, hum log plank bhi karte hain, but usually initially we start with these kind of planks rather than, like, postpartum when we start these kind of plank where we ask them to hold their abs in rather than going all the way down in normal plank position में. या अगर pelvic सबसे बड़ा है आपका core engagement technique. So अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी core engage नहीं है, अभी तो मेरा पेट इतना बचा नहीं है तो I can't show, but yeah, usually लोग ऐसे खड़े होते हैं. Okay, so we first day itself, whenever a person joins, we ask them to engage their core muscles. कैसे engage करना? Squeeze your abs in, not by pulling or sucking your breath in, but जब भी खड़े हो ऐसे, so squeeze your abs in. And whenever you're standing, doing any sort of exercise, whether you're sitting, laying down, doing whatsoever, you need to always keep your core muscles engaged. You need to keep your core muscles engaged while doing squats, while doing crunches, while doing any sort of exercise, even with the dancing, laying down, sitting, whatever. अगर आपने ये कर लिया 90% बैक किक खत्म हो जाएगा. Mark my words. Trust me, this is such a miraculous thing. Nothing, just the ideal core engagement technique, right? So once I was in Mumbai for my workshop. So वहाँ पे एक lady ने बोला मुझे, lady नहीं मतलब student ने मुझे बोला, she was quite senior to me that time. So उन्होंने मुझे बोला कि आपने हमको डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए तो एक्सरसाइज सिखाई ही नहीं. मैंने कहा मैं पिछले सुबह से आपको यही तो सिखा रही हूँ. So she told me कि नहीं, वो ब्रेसिंग बोलते हैं ना कि ब्रेसिंग करना चाहिए डायस्टेसिस एक्सरसाइज के टाइम पे. So I know आप सबके कैमरास ऑफ हैं, बट आप खुद कैमरास ऑफ में ही ये टेक्निक करके देखो जो हमको कृष्णर ने सिखाई है. कृष्णर बोलता है एक लेडी की लेटी हुई फोटो बनी हुई है इस तरह से घुटने मोड़ करके, और इस तरह से उन्होंने अपने हाथों से दोनों मसल्स को अंदर लिया हुआ है, एंड देन शी इज क्रंचिंग. जैसे आप में से किसी ने बोला स्कैपुला उठा के और इस तरह से इस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे. सो शी इज ब्रेसिंग हर abs and then she is lifting up. Now everybody you do this technique, okay, you try to do the bracing, you try to pull this. Now what are you holding with your hand? आपको हाथ में क्या पकड़ में आ रहा है? Are you holding your muscles? Are you holding your rectus abdominis muscles, or you are just holding your fat? Tell me. Anyone? We are just holding the fat actually. Yes, right, you are just holding the fat. So there is no way in the world कि आप इस तरह से पकड़ के muscles को एक दूसरे के पास लेके आ पाओ, right? So this is the worst thing what we teach to our students in the college, and I had no idea how. And हम लोग ये मान भी लेते थे कि क्रंच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. So I told her, and मैंने सबको करवाया उस दिन, क्योंकि उसके पहले मैंने भी सोचा नहीं, मैं ये सारी टेक्निक सिखाती नहीं मतलब मुझे ये यूजलेस लगती है. बट व्हेन आवर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड कि अरे डायस्टेसिस है मतलब ऐसे करके हल्का सा क्रंच कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. Now you squeeze your core muscles inside. सांस रोक करके नहीं, squeeze करो abs को और अंदर की साइड में. Now can you feel your muscles getting tightened up? बिना सांस रुके पेट को अंदर की साइड स्क्वीज करो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ. Now you can see the tight muscles. Okay, so you need to do bracing with the help of your muscle contraction, not your hands. Hands से आप केवल और केवल फैट को पास लेके आते हो. कोई कितना भी लीन क्यों ना हो, अगर आप किसी के सिक्स पैक एब्स है उसको भी आप ऐसे करके पकड़ के करने का बोलो, they can't take their muscles in. Okay, हाथ से पकड़ के ब्रेसिंग नहीं हो सकता. You need to squeeze your muscles from inside. You need to teach them the correct posture. You need to overall ask them to do exercises, right? And उसी के through उनको
like, once their core strength is good, automatically उनका maximum pain चले जाएंगे. केवल उनका सिटिंग पॉस्चर, लेइंग डाउन पॉस्चर, खड़े रहने का पॉस्चर, बच्चे को गोदी में लेने का, फीड कराने का पॉस्चर, एंड गिव देम ओवरऑल फुल बॉडी वर्कआउट्स, गिव देम आर्म एक्सरसाइजेस with small water bottles or dumbbells, ask them to do all the stretches, everything like cat and camel, even we teach them planks, सभी कुछ कराते हैं, पुशअप्स कराते हैं, हर चीज कराते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. Yes, everything with the core engagement technique will help. Ask them to reduce their extra fat. बहुत बार underweight mothers भी होती है जिनको pain होता है. Still we ask them to do full body workouts. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, अभी आज ही एक mother ने मेरे यहाँ join किया. So that person was 48 kgs and she was having a lot of pain and she told me, Swati, मुझे उठते बैठते नहीं बन रहा, बहुत backache है, and also I asked her to join my full class as in like full 1 hour class. I did not teach her 5 things, right? And when you want to increase your value in the medical world, in this complete commercial world, you can't just teach them 5 exercises and expect ki बहुत बार स्टूडेंट्स दे टेल मी कि मैम हमारे यहाँ तो पेशेंट आते हैं और बोलते हैं आप हमको सिखा दो, वो रोज नहीं आना चाहते, वो बोलते हैं आप हमको कोई भी एक्सरसाइज सिखा दो, हम घर पे जाके कर लेंगे. एंड हाउ डू यू जनरेट योर रेवेन्यू? You generate your revenue by recurring, how the patient comes to you regularly, and when they come to you regularly, so they'll actually do it, and when they do it, they'll see the results and they'll see the changes, and when they see the changes, they will tell to the world that okay, I have done this and this really helped me, I am absolutely pain free, I am feeling way better. Because अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो फिजियो के लिए रोज आएंगे ही सही, right? I'm tired. My COVID is bad. So yeah, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, तो वो रोज फिजियोथेरेपी कराएंगे, रोज आपसे ट्रीटमेंट लेंगे. बट अगर किसी पोस्टमार्टम मदर को कोई पेन है, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि मुझे बता दो, मैं घर जाके कर लूंगी, और that is fine. Do I really need to come to you regularly? I can't come. I have my small baby. I have this. I have that. I can't come. But nowadays, this world is a small place. You can take online classes. You can give online consultation. You can ask them with their babies. So everything is possible if you make a way out of that, right? So don't see a person's pain as a normal pain. पोस्टपार्टम पेन को ऐसे ट्रीट मत करो जैसे एल्बो का पेन है या थाई का पेन है. You need to take care of the person as a whole from head to toe, right? Now next time, don't let them tell कि ये पेन है तो ये एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जाएगा, या ये कर लो तो ठीक हो जाएगा. When you show your dependability, when you give your excellent services, that person would come to you by any which ways. That person would come to you leaving behind her baby, keeping her baby with her, coming back to online classes, whatever it is, right? So the right thing is to work on the person overall. Anything else if you want to ask me, if you want to discuss, or if you don't, I would say, if anything, what you found contradictory, what I've told, and if you feel कि नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे regarding postpartum, whatever. Anything you want to ask? Ma'am, since postpartum depression is also very common nowadays, so how can it affect the low back pain and how to deal with it basically? Because no, yeah, so देखो postpartum के वजह से पेन हो ये जरूरी नहीं है, but the back pain could be one reason out of many in postpartum depression. Like when you are not feeling physically fit, when you're not feeling physically at your maximum fitness level, you feel very vulnerable, you feel very useless, you feel are you a mother? I'm asking. no ma'am. You're not a mother, right? So when any one fine day when you will be a mother, you'll realize there are so many things
which happens after your delivery. The lady, she is not provided the kind of food she wants to eat. She can't go out. She can't wear the kind of clothes she wants to wear. Mostly सासू माँ या माँ के भी झगड़े हो रहे होते हैं. Mostly they don't go along with their in-laws at that particular time, right? उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स होते हैं कि अच्छा मदर आप या बच्चे को लेट्स से इफ बच्चा sneezes, so the person tells उनके घर वाले तुमने ये खाया तो बच्चा छींक रहा है, या तुम टाइम पे खाना नहीं खाते तो बच्चे का पेट दर्द कर रहा है. और actually ये सारी चीजें जो होती है, these are the major factors. Then the mother feels left behind. Everybody's, how's the baby? Everybody's like, towards baby's well-being and everything. So there are so many life changes which happen after the delivery. You feel very low. You're feeding all the time. You're sleep deprived. Because of the sleep deprivation also, because stress और pain का vicious cycle है, right? आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि स्ट्रेस और पेन और उसके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीजें विशियस साइकिल में जाती है. सो ऐसे बैकएक की वजह से डिप्रेशन या डिप्रेशन की वजह से बैकएक नहीं होता. अगेन सी द पर्सन एज अ होल, क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन डील विद दैट. बट ऐसा कोई इंटरलिंक करके हम उस तरह से ट्रीट नहीं करते. बट ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स एक्सरसाइजेस, ट्रस्ट मी, maximum time just by first session they feel so energetic and so healthy because they sweat, their heart rate is raised when they are exercising. Again, when I talk about exercise, it's not 5 exercise, it is full 45-minute workout, right? When they work out, they have all the endorphins and enkephalins and feel good hormones, and then they feel fresh after the exercises, they feel active, they feel moving. So maximum cases may depression, clinical depression be, I get clients referred from the clinical psychiatrist or psychologist for the postpartum depression. So yes, exercises, though those exercises really help in a long way. Aise keval backache wala nahi, overall that really helps in the depression. So I hope you can relate. Abhi jab aap mother hoge, Yes, ma'am. you can understand better. Yes, ma'am. Anything else? Anything you want to ask? Anything you feel I have not covered? देखिए exercises अलग से ऐसे एक एक बताना अभी it is not possible for me in this. अभी I'm any which way is not feeling well, and मैं कितना बता लूंगी एक घंटे में. तो I just wanted to give you an approach कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए towards a person with postpartum pains, right? क्यों होता है, कैसे होता है. बाकी धीरे धीरे हर टेक्निक आप पढ़ते ही हैं कॉलेज में. अगर आपको बाद में भी कुछ इशू होता है, यू कैन टेल मी, यू कैन पिंग मी. बट देन या वी टेक्निकली वी वर्क इस तरह से ओवरऑल कोर स्ट्रेंथ के थ्रू मैक्सिमम पेन्स ठीक हो सकते हैं इफ यू वर्क ऑन दैट. Anything else, or shall we wind up? Whatever the organizers can tell me. Any other Yes, ma'am. questions? Thank you, ma'am, for the warm session out there. I'm Dr. Sonam from Banasidas Chandiwala Institute Hi, of good to see Physiotherapy. you after a long, long time. Yes, Have your yes. pictures. Thank you so much, ma'am. And I'm glad that you're not well, and then you have given us so much time and valuable knowledge. Thank you so much. Okay. It was Pleasure lovely. was mine. Yeah, we are looking forward for more sessions, for the practical sessions offline with you. Yeah, let's see. Yeah. Thank you so much, man. Unnati, please come in and share. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing such an interesting and intriguing case and enlightening us with such important session. I hope that people will act upon the advices that you have provided through this session. So I would like to express my gratitude to all the guests and audience for joining us today, and would request all of you to join us again on our next case presentation that is to be held on 11th of February. And I would also request all of you to please fill the feedback form given in the chat box. All right. So thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. All Thank the you so much, ma'am. organizers and all the attendees. I wish
अगर आप आज के सेशन से थोड़ा भी कुछ आपके रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर आपके प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं, so you'll see so many, like, difference in the approach. And I wish you all the very best of luck. Thank you so much for joining. Tata, bye bye. Have a great day. Have a great future, you all. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, leaving. Bye bye. Requesting you all to fill the feedback form till the meeting is there. We have 5 more minutes. You can fill the feedback form.